समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। Okay, just give you some highlighted points. Spiritual progress depends upon bringing transformation in your unconscious. But between conscious and unconscious there is big distance. That distance has to be bridged. That term is used, Setu Bandh. So the whole project is how to create Setu Bandh so that your deep-rooted source of misery, they are not distant. You can confront them and you can eliminate them, sublimate them. Here now the cure is, or remover of misery is root and branch. If you have not come to that stage, you do remove your misery, but the roots remain stuck in the unconscious. So how to allow dhyana is Lakshmana, dhyana is Rama. How dhyana and jnana movement bring about a bridging project between conscious and the unconscious. At this stage, Sattva has assisted this whole project. As long as Sattva was with Sattva is Vibhishana, Rajas is Ravana, Tamas is Kumbhakarna. These three gunas are operating in every individual. But in spite of Sattva, Rajas, Tamas being there, Sattva does not give you the possibility for real happiness. But now the situation has changed. Sattva has been kicked out in a storyline. The idea now is, from practical point of view, that you find your solution to your challenges by listening to the voice of Sattva. Again, no matter how we say it, becomes allegorical. As Sattva begins to develop in your personality, your conscience becomes more sensitive to what is real, what is right. And therefore, in the storyline, Rama is being advised by Vibhishana. Every step that Rama now takes will be assisted by Vibhishana. The Sattva has all the knowledge of the other gunas. In other words, if Sattva increases, you have a vertical view of other gunas and their operations. Vertical view means you can understand them without being affected by them. And that role is being played by Vibhishana. Now at this stage, Vibhishana has advised Rama to offer prayers to ocean. And by force of prayer, seek the success of the project. Ask the ocean to give the path,
to show the path. Lakshmana was opposed to it, but Rama cooled him down. Lakshmana dhyana doesn't have much patience, but jnana aspect gives patience to dhyana. Many times you don't succeed in your meditation and you become very frustrated. But why should you be frustrated? Your understanding of yourself is increasing more. It is not dependent upon how long can you keep your eyes shut or how long can you go on experiencing a light coming out of your chakra. Many experiences jnana brings about, which are very comfortable. But, so coming to this, you depend now, jnana begins to play its role more than the dhyana. Rama, in brief, begins this profound project of invading the unconscious. Invading the unconscious, again, is allegorical term. Rama to bring all his energies, all the monkey army sena, to enter the unconscious and to fight against those demons that are controlling Sita. The whole project is to free Sita from that whole set. And Sita herself is not an ordinary human being. And Sita is Viveka Buddhi, intuitive intellect. Every soul essentially is being led to be united. Soul is essentially Rama. And it is Rama who plays these four roles. Jnana as Rama, Dhyana as Lakshmana, Bhakti as Bharata, Karma Yoga as Shatrugna. All these four, they are operative, that's called integral yoga. So while Rama is there, others are also busy doing their job. Rama, Lakshmana are one place, Bharata, Shatrugna is another place. Let me not go in that direction. The basic point now, as sadhana begins to open the gateway of entering the unconscious and making the unconscious vulnerable to spiritual force. This process first starts with prayer. So Rama starts praying. And after prayer comes surging energy, emergence of energy. And that's all that we put here in episode, interesting parable way. And as you go on seeing it, we'll talk about it more and more. भिखारियों की भांति रहते रहते हर की भीख मांगने की आदत पड़ गई है. And this project, ignorance that remains in static, ignorance is being awakened. Every movement Rama makes, it impacts upon Ravana. In a storyline, everything Rama does
Ravana's detectives bring the news. And so, any step taken towards success is laughed at by demoniac set. But when you laugh, you can see their teeth, you see, at least. Witty way all that I'm saying, that now they become vulnerable. They have been hiding, as it were. But now they begin to surf up. And so you hear the both what's happening with Rama, what's happening with Ravana, and what's happening with Sita, Viveka Buddhi. Viveka Buddhi is as if waiting. And only Rama's movement touches the heart of Sita. So that's the setting, and now. Yeah. I don't know. Confusing maybe last night's lecture. Lanka is the unconscious. Yes. And then the ocean. Was it anything? Drifting to In that context, the entire world process is described as ocean. Even this is the same actually. Entire world process. And the entire world process is brought about by your chitta. So chitta is your mind stuff. Your mind stuff is dealing with the highest truth called Brahman. Brahman is, and that Brahman alone is real. Mind stuff is not real. Blueness in the sky is not real. But the blueness hides the sky. Similarly, chitta in itself is not real, but chitta as if hides Brahman. And the terms used in Sanskrit for Brahman, chit. And chit that has become like the blue sky, chitta, is mixed up with Maya. Now that chitta sustains the entire story of from bondage to release of the soul. Because chitta plays two roles. It's like a vast ocean. And then ocean that goes on creating waves and whirlpools. And if you go after waves and whirlpools, the stories will be endless. And that's the story of the world process. But now in a vast way you see all this as work of chitta. And chitta in itself, pure consciousness. So this whole project is like as if building a bridge in the ocean of the world, a bridge that connects yourself to that project of turning chitta into chit. पुरुष ये समझता होगा कि समुद्र के सामने बैठकर रोएगा, अपनी व्यथा सुनाएगा कि मेरी पत्नी का हरण हो गया है, तो समुद्र दया से द्रवित होकर अपनी लहरों में उसको सूखा रास्ता बना देगा। जिनके साथी विभीषण काका जैसे कायर हो। Ravana is ignorance
and Meghnad is egoism. So their egoism shouts more than ignorance. वो ऐसी तय करेंगे, अन्न जल लिए बिना 2-4 दिन बीत जाने दीजिए, फिर वही वानर सेना उनके मृत शरीर की शोभा यात्रा निकालेगी। नहीं नहीं, ऐसी आशा बातें मत कहो। मैं नहीं कह रही पुत्री, मैं तो केवल तुम्हें राजमहल के समाचार सुना रही हूँ। वहाँ जो बातें हो रही हैं, मेरी एक सखी आकर बता जाती है। उसे तुमसे बड़ी सहानुभूति है, परंतु महाराज के डर के कारण वो तुमसे मिल नहीं पाती। परंतु माँ, यदि ये बात राजमहल में हो रही थी तो सच्ची होगी। तो क्या मेरे स्वामी निराश होकर समुद्र तट पर बैठे हैं? इस प्रकार समुद्र उनकी बातें क्यों सुनेगा? कहीं रावण की भांति संसार के और लोग भी उनका उपहास न करें माँ। नहीं नहीं पुत्री, ऐसी निराशा भरी बातें क्यों सोचती हो? विभीषण की पत्नी शर्मा भी कहती है कि श्री राम स्वयं भगवान का अवतार है। वो सर्वशक्तिमान है। वो चाहे तो Vibhishan's wife, Ramayana doesn't give highlight to her. Her name is Sarma. And in Indian folk, we use the word surma. Do you know? The eye powder makes you look brighter. So that's what sattva's role is. The more sattva within, better is your vision. The sattva is wedded to sarma, or actually surma, both ways her name. तुमसे सब कुछ कर सकते हैं। वो नर के रूप में आज जो कुछ कर रहे हैं, वो सारी कार्य संसार में आदर्श स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। तुम उनकी शक्तियों पर भरोसा रखो पुत्री। जल ग्रहण किए बिना तपस्या कर रहे हैं। माँ, जब तक उनका व्रत चल रहा है, मैं भी जल ग्रहण नहीं करूंगी। सीता बेटी? हाँ माँ, वो मेरे पति भी है, वो मेरे प्रिय भी है। वो भूखे रहे और मैं खाऊं, ये उचित नहीं। नहीं माँ, ये उचित नहीं, ये उचित नहीं। आसन डार पे पालती मार के बैठ गए प्रभु साधक जैसे। होए के याचक मांगो न जब तक, कोई कहूँ कछु देत न ऐसे। सागर सीमा पर न आवत, मर्यादा लांघन के भय से। श्री रघुवीर बड़े गंभीर, विचारक नीर तिन्हें अब कैसे।
सागर हे रत्नाकर, आपसे आज है काज हमारा। अमृत है तू न रत्नों के कारण, आपके सन्मुख आज पसारो। पंथ नहीं कोई पंथ नहीं, अब सैन्य सहित हमें पाल उतारो। ओ सहाय सुझाओ उपाय, रहे गौरिणी रघुवंश तिहारो। राम विराट है सिंधु विशाल है, दोनों दाद महान है दोनों। दोनों समृद्ध है दोनों है दाता, गुण और रत्न की खान है दोनों। एक अथाह है एक अनंत है, एक अथाह है एक अनंत है, धरती को वरदान है दोनों। एक है Okay, I'll give you the full meaning of the word sagar. Sagar is ocean. Ocean is symbolic of Brahman, all encompassing fullness. The sagar term is used in two ways. Brahman is Sukha Sagar, ocean of bliss. The world process you live in is Dukha Sagar, ocean of misery. But the soul has to evolve through the ocean of misery. Dukha Sagar has its purpose. As long as you are in the state of ignorance, you are bound, you are under the control of karma. An ocean God will explain why he didn't respond to Rama, because he is following the law of karma. Every soul must follow, and that is the state of the ocean. That's what the world process is, and it is salty. You take the salt out, then it becomes all sweet. The more you take it out, better you get into sweetness stage. So one is Dukha Sagar, another is Sukha Sagar. Rama is Sukha Sagar, ocean is Dukha Sagar. Both are facing each other. एक है थारो नहीं तो समान समान है दोनों। अतर सिंधु के जल में बह गए, जितने किए उपाय। अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ भी समझ ना आए, कुछ भी समझ ना आए।
प्रभु को पूर्वाभिमुख होकर महासागर की उपासना में तल्लीन हुए 2 दिन व्यतीत हो गए। क्या सागर इक्ष्वाकुवंशी महाराज सागर का अवतार हो गया? लक्ष्मण भैया तो इस विचार से सहमत थे ही नहीं कि प्रभु महासागर के सामने गिर गिराए। पता नहीं और कितने दिन लगेंगे। पल पल आशा टूटती, छूटो जाए धीर, घोर निराशा सिंधु ज्यों डूब रहे रघुवीर। हाँ भरत मेरे राम किसी संकट में, वो किसी विपत्ति के गहरे समुद्र में डूबता चला जा रहा है। कि आप क्या कह रही हैं माता? यह असंभव है। नहीं, मैंने इस रात को एक सपने में राम को एक अथाह सागर के मध्य में अकेले बैठे देखा। साथ में सीता नहीं दिखाई दी। वो अकेला है, भूखा है, प्यासा है, और धीरे धीरे समुद्र की लहरें उसे डुबोती चली जा रही है। भरत अपने भाई का पता लगाइए, वो अवश्य किसी संकट में है। उसे सहायता की आवश्यकता होगी। भरत, धीरज रखिए माता, धीरज रखिए। भैया पे कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती। अब उनके आने में थोड़े ही दिन रह गए ना, इसलिए भावनावश आपका मन भ्रमित हो गया है। अन्यथा उनकी शक्ति के आगे ये संसार तो क्या, तीनों लोकों में कोई ठहर ही नहीं सकता। देखिए, उनकी चरण पादुका पे रखे हुए फूलों में कोई मुरझायापन नहीं है, सब जैसे प्रसन्नता से आह्लादित है। शास्त्र के अनुसार ये शुभ शकुन का सूचक है। नहीं, शास्त्र लिखी शकुन और शुकुन का ज्ञान झूठ हो सकता है, परंतु माँ के हृदय की सूचना कभी झूठ नहीं हो सकती। मैंने स्पष्ट देखा, मेरा राम किसी समुद्र के बीच में फंस गया है। पर बेटे, यहाँ से समुद्र कितने दूर है? मुझे वहां ले चल, मुझे वहां ले चल। माता, समुद्र मैंने देखा नहीं, सुना है बहुत दूर है। बहुत दूर है, बहुत दूर। यहाँ से बहुत। What's being brought out here? Firstly, that whatever Rama is doing is touching all those who are related to Rama, especially the brothers who have 4 aspects of yoga, they are being touched. Integral movement is in the progress. And what is being highlighted, he saved Bharata, who didn't have patience after Dasharatha words made him king. He went to bring Rama. And now same Kaushalya is saying him go and bring Rama. Now he is in a state of strength. Bhakti has become mature now, stronger. And that's brought into that storyline. पुत्र किसी संकट में, और माँ आए देख राजमहल की सूख हो गई है। पुत्र ने भी मेरे पंख होते तो उड़कर मैं तेरे पास चली आती, परंतु क्या करूं? तू जान ले, जिस अवस्था तेरी सहायता करे, तेरी पीछे हो। विनय नमामि
जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सगोदर 18 days beat. Storyline, 3 days Rama stayed sitting like that. And all the monkey army, etc. stayed. Still without any noise, noise. Deeper movement, dhyana movement is also highlighting the state of dhyana. Lakshmana is also there. But Rama can represent jnana and dhyana, Lakshmana can represent dhyana and little of jnana also, because both are interrelated. What I'm pointing out, when you are doing dhyana in early stage, even in samadhi, you are aware of the world you are experiencing in three days. Yesterday, today, and tomorrow. So your deep meditation lasts only for 3 days. Beyond that you have no patience. Implying Rama's vision is turning to where time moves away. In meditation you do it, you are aware of past, present and future. Meditation is immature. Become very profound. Past and future have nothing to do with it. The question of highlighting present doesn't arise. All the 3 days we have spent, and the result doesn't come within those 3 days. This is a profounder meaning. महासागर भूतकाल साक्षी है। इक्ष्वाकु वंशी सदा पर हितकारी बनकर कुछ न कुछ देते रहे हैं, कभी किसी से कुछ लेते नहीं, याचना नहीं करते। रघुवंशी राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है, कुछ आशा रखकर तुम्हारी उपासना की है। 3 दिन से विधिवत पूजन करने के बाद भी उत्तर में तुम केवल अपने अहंकार का ही गर्जन करते रहे हो। मंदगति जल्दी तुम पर राम की प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम राम की विनम्रता को उसकी असमर्थता जानकर चढ़ बने हुए हो। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा। लक्ष्मण जी, तुम मेरा धनुष और सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ। आज संसार राम का क्रोध भी देखेगा। जो आज्ञा भैया, यह कार्य यदि उसी क्षण कर लेते तो हमारे 3 दिन व्यर्थ न जाते। अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तुम मेरा धनुष बाण ले आओ। जो आज्ञा भैया। जैसे मूर्ख के सामने विनय दिखाना और कुटिल के संग प्रीति करना व्यर्थ होता है, जिस प्रकार मोह ममता में फंसे हुए को ज्ञान का उपदेश देना मनुष्य और धरती में बीज बोना विफल होता है, उसी प्रकार तुम जैसे अहंकारी के सामने राम की विनय और पूजा का कोई मोल नहीं पा। समस्त देवी देवता और यहां के चराचर जीव इस बात के साक्षी रहे
कि मेरे पास समस्त समुद्रों को सुखा देने की शक्ति होते हुए भी मैंने वरुण देवता का मान रखने के लिए पूर्ण विनय और सच्चे हृदय से समुद्र की पूजा की है और सिरे सहित पार जाने में इनसे सहायता मांगी है, परंतु इस शठ ने मेरा उपहास ही किया है। शास्त्र कहता है जैसे केला काटने पर ही फल देता है, उसी प्रकार नीच दंड देने पर ही झुकता है। अतः अब मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करके इस समुद्र को पाताल तक सोख दूंगा। अब जल के स्थान पर यह केवल वेग और तालू रह जाएगी, जिसके ऊपर से मेरी सारी सेना आगे बढ़ेगी। जय ब्रह्मदेव। क्षमा करो प्रभु, मेरे अवगुण क्षमा करो। आपकी पूजा और विनय के उत्तर में मैंने अपना स्थान छोड़कर आपको मार्ग नहीं दिया, इसमें अवश्य मेरा दोष है, परंतु ये दोष तो आप ही का दिया हुआ है। आपकी प्रेरणा से simple moral behind it, that the whole world process, which is like the ocean, that ocean cannot give you liberation. Because ocean of the world process is meant for soul's evolution. And if you are bonded by karma, ocean will give you what you deserve according to your karma. The ocean will not give liberation. Liberation has to be attained by Rama's own effort. And it is a divine law, that's what being brought out. And Rama's anger was just to show this difference. मेरे अवगुण क्षमा करो।
आपकी पूजा और विनय के उत्तर में मैंने अपना स्थान छोड़कर आपको मार्ग नहीं दिया, इसमें अवश्य मेरा दोष है, परंतु ये दोष तो आप ही का दिया हुआ है। आपकी प्रेरणा से माया ने प्रकृति में जड़ चेतन सृष्टि की उत्पत्ति की है। उसी ने जड़ और चेतन की भिन्न भिन्न मर्यादाओं को निर्धारित किया है। प्रभु, हम पांच तत्व अर्थात आकाश, धरती, अग्नि, वायु और जल इस सृष्टि के मुख्य आधार हैं। इन पांचों के गुण, स्वभाव और मर्यादाएं आपकी स्वीकृति से ही निश्चित की गई है। मुझमें सहस्त्रों तरंगें उठती हैं, परंतु मैं कभी अपने तत्व की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। मेरा स्वभाव अक्षुब्ध है, परंतु आज आपके बाण ने मुझे क्षुब्ध कर दिया। जल यदि अपनी मर्यादा को भंग करेगा तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। आप तो सर्वसमर्थ स्वामी हैं, आपको बाण चलाने की आवश्यकता भी नहीं। आपकी इच्छा मात्र से ही मैं सूख जाऊंगा और आपकी सेना मुझे पार कर जाएगी। परंतु भगवान, उससे मेरा मान और मेरी मर्यादा दोनों भंग हो जाएंगे। पांच तत्वों में से यदि एक का भी इस प्रकार गुण और स्वभाव बदलकर उसकी मर्यादा भंग कर दी जाएगी तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इस धरती पर विस्फोट हो जाएगा। प्रभु, यदि आप प्रलय से पहले ही प्रलय लाना चाहते हैं तो आपको अधिकार है, अन्यथा इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी, मैं एक सेवक की भांति आपकी शरण में आया हूं। जैसा उचित समझें आज्ञा दें, मैं वही करूंगा। मेरी रक्षा करो अथवा दंड दो। हमें तुम्हारे वचनों से संतोष हुआ। हम तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं करेंगे, परंतु हमें वो उपाय बताओ जिससे हमारी सेना भी उस पार उतर जाए और सागर की मर्यादा भी रहे। नाथ, इसका उपाय तो बहुत सहज है। आपके सेनापतियों में नल नील नाम के दो भाई हैं। बाल्यकाल में वो बड़े शरारती बालक थे। वो ऋषियों का सामान उठाकर नदी में फेंक आते थे, जिससे दुखी होकर एक बार एक सिद्ध ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वो अपने हाथ से जो कुछ भी सामान उठाकर पानी में फेंकेंगे वो कभी डूबेगा नहीं। आज वही श्राप आपके काम आएगा। नल विश्वकर्मा का औरस पुत्र है, इसे शिल्प कला भी आती है। Just let me, this very condensed philosophy brought into this episode. Nal Neel, they are symbolic of Abhyasa and Vairagya. What Soshan says, that he could not open up a channel for Rama. Rama has to go through Abhyasa and Vairagya. And Nal represents pipes. They're called Nal. Neel is another type of energy. Both are needed in practical world. But without going into that direction, Nal Neel represents Abhyasa and Vairagya. So anything the Nal Neel will handle will not go in vain. Every stone Nal Neel puts it
Ocean cannot drown it. World ocean is always trying to drown all that you are doing. But when you are doing abhyasa and vairagya, repeated sustained sadhana, along with increasing dispassion, detachment from the world. When this movement continues, blessed by Hanuman Shraddha-based strength, then Rama's mission at the entry into the unconscious, finding Sita, all becomes possible. It's called Setu Bandhan. In yoga exercises, the Setu Bandhasana. And it gives good energy to your knees. Twice so much. Again, get to go. One more, same answer. यदि ये दोनों भाई अपने हाथ से जल में पत्थर डालकर समुद्र के ऊपर सेतु बांधने का कार्य करें, तो लंका तक एक ऐसा सेतु तैयार हो जाएगा जिसके ऊपर से चलकर आप Same japa you are doing, most times it doesn't seem to be effective. But if you are doing it along with the law of abhyasa and vairagya, then whatever you are doing sadhana day by day, it goes on adding up and gives a cumulative effect. समुद्र के उस पार पहुंच जाएगी। मैं वचन देता हूं कि इनके डाले हुए पत्थरों को और उनसे निर्मित सेतु को स्वयं भी धारण करके सेतु बंधन में स्वयं इनकी सहायता करेंगे। इस प्रकार समुद्र को बांधने से तीनों लोकों में आपका सुयश गाया जाएगा। हे रत्नाकर, हे सागर, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी उदारता से हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हो गए, परंतु हमारी एक और समस्या का समाधान करें। आज्ञा प्रभु। हमारा ये बाण अमोघ है। एक बार इसका धनुष पर संधान हो जाए तो बिना लक्ष्य भेदे ये वापस तुड़ी में नहीं जाता। इसलिए तुम हमें अब ये बताओ कि मैं ये बाण किस दिशा में और किस पर छोड़ूं? प्रभु, उत्तर दिशा में ध्रुमकुल्य नाम का एक पवित्र देश है। वहां बड़े भयानक दस्यु रहती है जो अपने पाप कर्मों से वहां की पवित्रता का नाश करती है और मेरे जल का दुरुपयोग करती है। प्रभु, आप अपने बाण को उन्हीं पर सार्थक कीजिए। तथास्तु। What ocean is saying. People will practice abhyasa and vairagya. And your practice should open the passage of Uttarayana, northern path. So you have started your project with a bow and arrow. Where should you shoot? Shoot in that direction, north direction, and pave the way for Uttarayana movement. Agni Jyoti Aha Shukla. And while that is, whole project is defined by Rama's focusing himself to northern path. Now extensions of that whole project is Setu Bandhan, bridging the ocean. And your abhyasa goes on bridging it.
इस बाण के प्रहार से वहां की धरती मरुभूमि हो जाएगी, परंतु वहां पर अनेक सुगंधित औषधियां उत्पन्न होंगी जिनसे जीवों but the arrow will make the earth barren, desert. But then Rama adds, but wonderful fragrant flowers will emerge out of it. This is the description of Vairagya and Vivek. Nothing exists. Fire. But you have faced the fire and saw the world as a desert. Now all that exists is God's revelation of God, divine movement in the form of divine virtues, and the glory of God in the world becomes our basis for experiencing or enjoying the glory of God, not the basis for keeping your love for sense pleasure active, but a basis for allowing your soul to become more and more devoted to God. That change is what he describes after the day, after the desert, it will be all wonderful. And with this, we'll close up. Om Triambakam Yajamare Sugandhim Pushtivardanam Urvarukum Bandhanan Mrityor Mukshyamanamritat Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashchid Dukbhag Bhavet Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat.